Good evening, everyone. Welcome to matrixdigilearn. Dear students, we will discuss about internet application today. First question, a popular way to learn about computers without ever going to classroom is called गोटे पॉपुलर वे जो थ्रे कि आमे कंप्यूटर रे पढ़ी परिबा कोनोसी फिजिकली क्लासरूम को न जाई द राइट आंसर इज एनीवन ऑप्शन सी द राइट आंसर इज ऑप्शन सी ई लर्निंग नेक्स्ट क्वेश्चन 2 in order to use cable for browsing web you will need तमे केबल रो ब्राउजिंग करिवो तो आ भितर को ऑप्शन को तमे यूज करिवो बा को जिंस को यूज करिवो ए केबल मॉडेम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और एनआईसी both of above none of these anyone the right answer is both of above NIC भी यूज करा जाए केबल मॉडेम भी यूज करा जाए most worldwide web pages contain commands in the language worldwide HTML. web anyone HTML. The right answer is HTML. Web pages are designed by HTML. TCP stands for Tools Control Protocol. Transmission Control Protocol. B. Option B, Transmission Control Protocol is the right answer. Option B is the right answer. Next. Unsolicited commercial email is commonly known as Spam. anyone? Spam, Hyperlink. Hyperlink. hypertext. Option I B. think that is wrong. Hyperlink. Hypertext. That is, I think, wrong answer. Option A, spam means Spam. the message which is not sent and that is not properly sent. That is known as spam. सर पिल्ला गुडी कोंतो म्यूट मारिया को समस्त सब स्टूडेंट मानु प्लीज समस्त म्यूट कर दियो वॉइस केवल सुनो जदी केवल आंसर ही दबा को चाहूचो तो केवल आंसर ही सेति बेले तमे ऑन करि परिबो बाय द वे तमे टेक्स्ट मेसेज भी लिखो किछ असुविधा नहीं आई थिंक मु तुमको टिके इंटरनेट ऊपर इंट्रोड्यूस कर दोची काहिना टॉपिक मध्ये मते लागु छी टिके टिके डाउट भीतर तमरो रहूची रंजित बेहरा टिके म्यूट करो Internet is the world's largest computer network which connects computers all over the world. Internet विश्वर सर्वबृहत्तम कंप्यूटर नेटवर्क जहाँ को कि नेटवर्क मानकर नेटवर्क बोली भी कहा जाए जहाँ पृथ्वी रे समस्त कंप्यूटर को एकाठी करि पारे समस्त नॉट कंप्यूटर द डिवाइसेस व्हिच इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट दैट कैन बी गेट टुगेदर बाय द वे ऑफ इंटरनेट हमें जो नेटवर्क विषय कहचे LAN WAN MAN PAN इंटरनेट इज द लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क एंड द ऑल नेटवर्क्स विद इन द इंटरनेट समस्त नेटवर्क गुडा को इंटरनेट भीतर रहि जाय ताले जदी इंटरनेट रो हमें यूज करिबा ता पूर्व टिके जानिबा दरकार व्हाई वी यूज इंटरनेट कोन पाई हमें इंटरनेट रो व्यवहार करिबा देयर आर मेनी एडवांटेजेस
on the internet. You can get many advantages on the internet. Just like you can chat with other users online. तमे online ने थाई अन्य user मान को सहित chatting करि परिबो. You can send or receive emails. तमे काहा को email पठेई परिबो बा काहारो email receive करि परिबो. You can do online shopping. तमे online shopping करि परिबो. Items can be get delivered to your home. जिनसा सी घरे पहुंच जाई परिबो. And payments can be made from the bank accounts. Bank account through payment ही जाई परिबो. ता छडा जदी हमें किछि information जानि पारु नाही, means it is a storehouse of information and we can get any amount of information on any topic just by sitting at our computer. हमें computer सामने रे बसी जे कोन सी प्रकार information को खोजि दे परिबा by the way of search engine. Then there are many advantages like big organizations, universities, institutions, railways, airlines, hotels, etc. have their own websites. They can give the information about their work by the websites. You can done booking on these sites while sitting at the home. मध्य घरे बसी कि ये साइट जरिया रे समान सहित बुकिंग करि परिबो. So there are many advantages of the internet. There is just some doubt of the web and internet. Particularly web is the application of the internet. Whatever we can use by the web for internet, that contents or applications are web, and the internet is the best suitable medium by which we can access these web contents. And these web pages, these web contents can be linked together by a system. That system is known as www or a World Wide Web or W3. Then the content stored on the page by the way of a technology, or you can speed he जाउची टिके slow कहबी ठीक अछि. तो आमे जो कहूचे इंटरनेट रो जो जिंस गुडा का आमे पाउचे से जिंस गुडा को आमे गोटे वेब कंटेंट्स बोली कहू. एंड सेई वेब कंटेंट्स गुडा को पर्टिकुलरली आमे जहां माध्यम रे असेसिंग करू, दैट मीडियम इज इंटरनेट. वेब इज द एप्लीकेशन एंड इंटरनेट इज द मीडियम. देन जो वेब पेज कहूचो बा वेब कंटेंट्स गुडा को कहूचो सेई वेब कंटेंट्स गुडा को पर्टिकुलरली आमे गोटे सिस्टम माध्यम रे रखी जे बा सब वेब पेज गुडा को गोटे सिस्टम माध्यम रे लिंक करिके रखा जाई छी. दे आर इंटरलिंक्ड और इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर. दैट सिस्टम जो पद्धति का कहूचो सेटा को जे www और वर्ल्ड वाइड वेब. सो व्हेन वी ओपन ए वेब पेज, जेते बेले आमे कोन गोटे वेब पेज को ओपन करू ता आरंभरू हमको www लिखिबा को पड़े, because www is a system of interlinked documents. That documents are known as your web pages. When these web pages are get together, जेते बेले ए वेब पेज गुडा को आमे एकाठी रखुचे, that is like a website. Website is like a book. Just book has many pages. Similarly, a website is made of many web pages, and particularly each website has one main page that is known as home page. Then go to about the server part. When we make the web contents available, that is stored in a particularly machine or a advanced machine, that is known as web server. Just as a traffic police manages its traffic post, जेमती गोटे traffic police ता traffic post को management करूची, exactly सेमती से जो web contents गुडा को management करिबा पई गोटे device control करे, that device is known as server. There are many servers, but server is that computer makes the web contents available through internet services. Internet सेवार थाई जो computer हमको web contents गुडा का available कराए, that is known as your web server. And whatever the devices connected to the web server, they are known as the web clients. जो माने से सर्वर सहित कनेक्टेड हुवंती वेब कंटेंट्स को पाइबा पई, तो से माने को गोटे गोटे वेब क्लाइंट कहंती. तो सर्व रु सर्वर है जे सर्व माने तमे समस्त जानिथिबो किछि जिंस को परछिबा, तो हमहु से वेब कंटेंट्स को सर्व करूची बोली ताको हम वेब सर्वर कहूचे. And just like using the laptops, mobiles, your desktops, we can connect it to the internet and get the web services. So we are known as the web clients. Then after, the basic part of the email. Email means the electronic message. You can send the email message to particularly anyone with an email ID. जेमते घर को गोटे चिट्ठी आसीबा पई हेले घर रो एड्रेस दरकार, एक्जेक्टली सेमती तमे जदी इंटरनेट रे कोन सी मेसेज को सेंड करबा को चाहिबो तो तमरो सेथि पई गोटे ईमेल आईडी बा आइडेंटिफिकेशन थिबा दरकार. से ईमेल आईडी रो व्यवहार करी कि तमे कहार मेल रिसीव करि परिबो एंड कहा को मेसेज सेंड भी करि परिबो. देन आफ्टर जिबा हमें से जो ईमेल रो भी बहुत बड़ा एडवांटेजेस अछि, डिसएडवांटेजेस अछि, जेमति कि स्पीड कहि परिबो, रिलायबल कहि परिबो, कॉस्ट इफेक्टिव कहि परिबो,
एगुडा कहूची ईमेल रे सब एडवांटेजेस सेमती डिसएडवांटेजेस भी मने बहुत गुडा अछि जेमती कि होची लैक ऑफ इमीडिएट रिस्पांस लैक ऑफ सिक्योरिटी आल्सो बेले बेले जदि जाने पासवर्ड भी जानि जाइथिबो तम सिक्योरिटी को जानि जाइथिबो तो सेटा को पासवर्ड को ओपन करिक भी तम ईमेल को करबो बेले बेले स्पैम भी hi जाय बेले बेले ओवरलोड भी hi जाय माने जति कि मेसेज रहिबा कथा ताठरो अधिक होई गला परे आउ मेसेज आसी पारे ना तो एमती बहुत गुडा डिसएडवांटेजेस भी ईमेल क्षेत्र रे देखिया को मिले देन गोटे भाइटल पार्ट आसी सर्च इंजिन तमे जानिथिबो जेमति कि आमे बेले बेले कोनोसी सब वेबसाइट हमको जणा न थाए देयर आर सम अननोन वेबसाइट्स आल्सो देयर तो सर्च इंजिन दैट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर which can help us to get information in a easy way means this maintain the databases of all web pages एठी सब वेब पेज रो डाटाबेस मेंटेन होची आमे ए जगह को जाई कि हमर टॉपिक ता वर्ड वाइज बा पेज वाइज लिखि देई सर्च मार देले पर्टिकुलरली ता रिलेटेड जिते वेब पेज थिबो से हमको देखाई दबो तो दैट इज नोन एज सर्च इंजिन लाइक गूगल याहू अल्ताविस्टा लाइकस योर डॉगडॉगो बिंग such type of things you known as the search engines then after the vital part web browser what is web browser web को browsing करिबा पई web को searching करिबा पई जो सॉफ्टवेयर हमको हेल्प करे that is the web browser तो web browser is that software which is a interface means जोटा गोटे पृष्ठभूमि रूपे काम करे the user and the inner workings of the internet specifically the world wide web by www सहित यूजर रो इंटरलिंक करिबा पई यूजर रो कनेक्ट करिबा पई यूजर रो इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट पहुंचेई वेब सर्वर रो इंफॉर्मेशन आनिबा पई जो सॉफ्टवेयर ता दरकार अछि हमर दैट इज द वेब ब्राउजर तो वेब ब्राउजर लाइक योर गूगल क्रोम मोजिला फायरफॉक्स ओपेरा माइक्रोसॉफ्ट एज तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर नोन एज योर वेब ब्राउजर देन आफ्टर we go to another thing over the internet your internet addressing commonly thing internet addressing means whatever the computers ko computer ba ko device kuda ka internet re connect hochi then after whatever the internet resources kon internet re ame jinso guda ka ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ and which user ko user basi काम करूची all these things are known as the internet addressing means internet addressing भितर सब जिंस आसी internet addressing भितर तम तीनटा जिंस आसी गोटे होची IP address गोटे होची डोमेन नेम आ गोटे होची URL common thing IP address means internet protocol address each device is connected with the internet have an identification जेमते प्रति लोकर हमें आइडेंटिफिकेशन बने पे आधार कार्ड बने छी तो एग्जैक्टली सेमती इंटरनेट सहित जेते डिवाइस कनेक्टेड हो समस्त गोटे आइडेंटिफिकेशन अछि that identification is known as your internet protocol number that is a uniform number of your 4 bytes or 32 bit number 4 byte बा जोटा कहछो 32 बिट रो नंबर प्रति नंबर गुडा को यूनिफॉर्म टाइप रो and each number separates from separate to one another by a point of dot and each number from 0 to 255 प्रत्येक नंबर 0 रो आरंभ करी 255 भितर थाय जेमती गोटे टाइपिकल वेब एड्रेस हमें कहिबा जेतरो वेब पेज तुम फिटौथिबो देखिबो हमरो टास्क बार रे लिखि दोथिबो वेटिंग फॉर द IP एड्रेस 265.63.134.23 ए टाइप रो गोटे टाइपिकल वेब एड्रेस रो मो एग्जांपल कहली जोटा कि प्रति नंबर गुडा को 0 रु 255 भितर रहउची एंड प्रति नंबर एई भली नंबर गुडा को फॉर्मेशन हेताय देन आफ्टर वी गो टू अबाउट द डोमेन नेम practically it is impossible to remember the IP addresses हमें जेतबे भी इंटरनेट रो कोनोसी रिसोर्स खोजिबा को चाहिबा IP एड्रेस हमको मन रखिबा को पड़िबो तो प्रैक्टिकली गोटे लोक IP एड्रेस मन रखि परिबो नाही गोटे कॉमन यूजर IP एड्रेस को मन रखि परिबो नाही सो ए सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड to that is identify the IP address that is known as the domain name. Domain name means it is a way to identify a particular machine over the network and these domain names are two types. One is generic domain name and another is your country specific domain name. The generic domain name this is a 3-letter abbreviation and country specific domain name this is generally 2-letter abbreviations. Generic domain name .com for the commercial organizations, .edu for the educational institutions, .org for the non-profit organizations, .gov for the government organizations, .net for the organizations directly involved to the network operations, like country codes .in for the India, .uk for the United Kingdom or England, .us for the United States means America. तो ए टाइप रो बेले बेले कंट्री कोड मध्य यूज हेता है जहां भी हो से पर्टिकुलर सेही वे रे पर्टिकुलर आईपी नंबर को खोजी हमर रिसोर्स को एक्सेसिंग करि थाए
Then after last part of the internet addressing is your URL, uniform resource locator. Common thing, jette web page amar internet रे available अछि, each web page has a address. Jette गुडा को web page load करा अछि, समस्त separate address अछि. So identify that particular web page is known as the URL. That means URL is a complete web address. Web address ro complete ta hochi URL. Just like your first is your access method, then after computer location, and last part of the URL. The last part of the URL. The first thing, internet access method koche http:// then after www.microsoft.com/index.html means here http:// is the access method, www.microsoft.com is your computer location, and index.html, the last part of a URL means file part of the URL. This is a complete web address, the URL. Like that, many more things over the internet. We will discuss about these topics. You may clear that things whatever remaining there. ଆଉ ଯାହା ବାକି ରହିଗଲା ଏଇ MCQ ଗୁଡାକ discussion କଲେ ବି clear ହେଇଯିବ. Which of the following would you find on LinkedIn? LinkedIn ରେ କୋଉଟା ଆମେ ପାଇବା? Connection. Connections. B, connections, because this is the connection media. Dash search engine sends request for information to several simultaneously and compiles the results. Who search engine? Again? Option C. Option C. Option A, Meta. Now this is very popular, Meta. Next, which of the following is called as protocol? The URL http://www.xyz.com. ebe just mu recently discussion କରୁଥିଲି. Anyone? Option B. Option B, www. এটা হেই নଥିବ କେବେ ବି. Option B is the right answer. ମୁଁ ଏବେ just ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି http:// is the access method, is the protocol, and जो तमे जोटा कहउछ xyz, that is the your host, and last part of the URL is anything else. Or option D, http is the right answer. Next, you can dash a search by providing more information the search engines can use to select more useful set of results. Anyone? Slow down. Option D. Option E, slow down. Option A, refine. Next, IP addresses are converted to करे a binary string, a hierarchy of domain names, alphanumeric string. None of these. एमती कोन केबे हि परिबो कि ए हायरार्की ऑफ डोमेन नेम्स मु जस्ट टिके आगुरो एबे कहउथले तमे केयरफुली सुनिलो नाही मो कथा मु कहली ना जेतेबेले प्रॉब्लम हुए गोटे यूजर प्रैक्टिकली गोटे आईपी नंबर को मन रखी पारे नाही सो ताकू गोटे सिस्टम को दिया गला जेमति कि जोटा कहउछ डोमेन नेम दैट इज रिलेटेड टू द पर्टिकुलर आईपी एड्रेस सेतमे जेनेरिक डोमेन एवं कंट्री स्पेसिफिक डोमेन जस्ट टिके आगुरो मु डिस्कशन करथले ओके क्वेश्चन टा आउथरे IP addresses are converted to IP address ता हमर कोथ्रु को कन्वर्टेड हुए ए हायरार्की ऑफ डोमेन नेम्स जस्ट टिके आगु मु कहउथली डिस्कशन करूथले ना इंटरनेट एड्रेसिंग रे अच्छा नेक्स्ट को जिबा हमें रोल ऑफ IP address is गोटे IP address रो रोल व्हाट इज द रोल ऑफ IP address all of the above all of these Option D, all of the above. Sabu kichi kore IP address. Next, the folder retains
copies of messages have started but are not yet ready sent सेटा कोथिरे थाए एटा ईमेल रिलेटेड आई थिंक जस्ट टिके आगुरु म कहउथिली सब इनबॉक्स ऑप्शन सी E. कहली इनबॉक्स बोली सेति पई की the folder retains copies message have started but not yet ready to send हम ईमेल रो बहुत उडे ऑप्शन पाउछो गोटे होची ड्राफ्ट गोटे होची इनबॉक्स गोटे होची आउटबॉक्स गोटे होची स्पैम आ गोटे होची ट्रैश ए बडी जो पाउछो जस्ट के मु कहि दूची इनबॉक्स रे पर्टिकुलरली तुमको जो माने मेसेज सेंड करंती सेटा स्टोर होई थाए एंड तमे जो माने को मेसेज सेंड करो सेटा सेंड रे शो करे एंड जो उडा को मेसेज स्टोर होई थाए बट सेंड हे पार न थाए ड्राफ्ट रे थाए एंड जो मेसेज गुडा को अनसॉलिटेटेड माने जाई पारि न थाए कोनोसी कारणवशतः सेटा सब स्पैम रे पड़ी थाए जो गुडा को तमे डिलीट करि देथिबो दैट इज इन द केस ऑफ द योर ट्रस्ट रे थाए आर यू क्लियर अबाउट दिस टॉपिक क्लियर हलो कि मु जहा कहली No, sir, आउथरे ईमेल रे अनेक गुडाए ऑप्शन यूज करा जाए तमे जतले ईमेल रो यूज करूछो ता भितरे जो ऑप्शन गुडा को पाउछो जेमति कि इनबॉक्स रे पर्टिकुलरली जो माने तमको मेसेज सेंड करंती ईमेल सेटा स्टोर हुए एंड जो मानको तमे मेसेज सब सेंड करो सेटा सेंड रे थाए देन आफ्टर जो मेसेज गुडा को तमे स्टोर करि बा सेव करि के रखी थाओ बट बाय द वे सेंड ही पारि न थाए सेटा ड्राफ्ट रे थाए जो मेसेज गुडा को कोनोसी कारण वशत सेंड ही पारिला नाही तो स्पैम रे थाए एंड जो मेसेज गुडा को तमे डिलीट कर देछो कोनोसी कारण वशत सेटा सब ट्रैश रे पड़ी थाए जहां भी हो तो ए जो राइट आंसर होची ड्राफ्ट मींस जो मेसेज गुडा को हमर रिटन थाए कॉपी थाए बट कोनोसी कारण वशत रेडी न थाए सेंड पाए सेटा सब ड्राफ्ट भीतर हमर थाए नेक्स्ट द यूआरएल http://www this site http is the just Protocol. again protocol Option A. right answer this is Option the A. protocol this is the domain name One. or this part of the portion label http is the okay next सर आंसर टा कोन होला answer is the your domain name next with dash the computer's modem uses a started telephone line to connect to internet anyone Satellite. Option E. option E satellite option B is the right answer dial up passes इंटरनेट रो कनेक्शन पाइबा को ले हमें ए सब मेथड को यूज करू इंटरनेट रो बहुत गुडाए कनेक्शन थाए डायरेक्ट कनेक्शन थाए डायल अप कनेक्शन थाए डीएसएलआर कनेक्शन थाए आईएसडीएन कनेक्शन थाए ई सब थाए बट से कहया कथा विथ डैश द कंप्यूटर्स मोडेम यूजेस ए स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन ताले स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन हिसाब रे यूज करे ऑप्शन बी रे डायल अप कनेक्शन रे जोथरे कि तमरो आईएसपी पाखरे बा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पाखरे गोटे आइडेंटिफिकेशन थिबो गोटे टेलीफोन लाइन रो कनेक्शन थिबो जे कि तुमको इंटरनेट सर्विस देई परिबो गोटे मोडेम थिबो एंड जो डिवाइस रे तमे कनेक्शन करिया को चाहू से डिवाइस थिबो एंड इंटरनेट रो कनेक्शन करिवा पई नेटवर्क रो डिवाइस गुडा थिबो बस हमरो इंटरनेट कनेक्शन करि परिबो तो राइट आंसर इज द डायल अप passes okay next the dash controls a client's computer's resources client रो कंप्यूटर रिसोर्स को के कंट्रोल करे Operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम वो जस्ट एबे आगुरु पूरा गप्प आकार तुमको सब किछि कहि दैछि तो आई थिंक दैट इज नॉट राइट आंसर हां ऑपरेटिंग सिस्टम नेक्स्ट नेक्स्ट आंसर ए डैश appearing on web page opens another document clicked एमान को भितर कोटा गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्टिंग करि पारे Hyper. Option B. Option B. URL URL URL. the right answer is C hyperlink means when you click on the hyperlink that is open another document hyperlink has been highlighted
that is underlined or in a special color. That means that may be in green color or blue color. Hyperlink. Okay. Next part. Which of the following terms is not related to internet? एमानक भितर कोटा इंटरनेट सहित रिलेटेड नुह? फंक्शन की फंक्शन हाइपरलिंक फंक्शन की नहीं सर ऑप्शन बी फंक्शन की इज नॉट रिलेटेड, लिंक इज देयर. ब्राउजर तो जस्ट टिके आगुर मैं कहूथिली ना, वेब ब्राउजर जो वाइटल पार्ट न तमे वेब किछि ब्राउजिंग ही करि परिबोनी. सर्च इंजन विषय भी कहूथिली, से सर्च इंजन द्वारा ही तमे कोनसी इंफॉर्मेशन इंटरनेट रो इजीली सर्च करि परछो. हाइपरलिंक तो वाइटल पार्ट, काहेकि ना हमें हाइपरलिंक रे ही क्लिक करि कि कोनसी वेब पेज को ही अन्य गोटे लिंक वेब पेज को ही पिटै थाउ. ओके. नेक्स्ट, योर बिजनेस हैज contracted with another company to have them host and run an application for your company over the internet. The company providing the service to your business is called application service provider. Again, anyone? आमे कोन कहिबा सेटा को गोटे कंपनी सहित हम बिजनेस होस्ट आकार कनेक्टेड हेछि एंड एप्लीकेशन रन करूची इंटरनेट रे, એટલે कंपनी हमको प्रोवाइडिंग करूची सर्विस ता, तो हम पई सेटा कोन हबो? आई थिंक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. Oh sorry, outsourced agency means he is not connected with us. Okay. URL stands for एबे जस्ट टिके आगु कहिछि संगे संगे. Option A. Uniform resource locator. Right answer. Uniform resource locator. Next, the dash shows all the websites that you have visited over a period of time. कोटा तमरो अनेक गुडे वेब पेज को देखिबो जहा को ओवर पीरियड ऑफ टाइम में हम यूज करू. Status bar. स्टेटस बार. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. हिस्ट्री लिस्ट. तमे जो जो वेबसाइट गुडा को खोजिछ जनरली सेडा तम हिस्ट्री रे ही मिलि थाय. आउ सबुठ गोटे इंटरेस्टिंग कथा सेटा जो आमे जे पर्यंत ताकू से जो हिस्ट्री को डिलीट न करि थाउ से पर्यंत सेटा अवेलेबल थाय. नेक्स्ट, एबे सब डिस्कशन मु एगुडा करिछि, मु सेथि पई तम डाउट क्लियर करिया पई सब डिस्कशन करिथिली. तो an educational institution would generally have the following domain name. कोटा एटा ऑलरेडी एग्जाम रे भी पढी छी. तो एटा कोटा EDU. again option B is the right. Option B is the right answer. Educational institution में .edu व्यवहार करा जाए. Okay. The piece of hardware that converts your computer's digital signal to an analog signal that can travel over the telephone line is called a Modem. Option D. Option D, modem. Modem, right answer. Next, ASDL gives, ADSL gives Faster down. Option A. faster downloading speeds and receiving the uploading speeds, sending. बस faster loading देता है इटा receiving पाई and sending पाई. Okay. Which of the following is not true? Connection user IDs and password. User ID एवं password को connection करिबा पाई एमान को भितरु कोटा माने ट्रू नुह? Anyone? Option D. Option D. You should share your user ID and password with at least one other person. Okay. Next, a word in a web page that when clicked open another document. Hyperlink. No, reference. Again.
Confused. Confused not, that is hyperlink. Hyperlink is that when you click that is go to the another web page linked. Okay, next. The secret code that gives you access some programs. Very easy thing, very common thing. Password. Password. Okay, password. Next. A web dash consists of one or more web pages located on a web server. Side. Site. Template. ଟିକେ ବୁଝାନ୍ତୁ। A web dash consists of one or more web pages located on a web server. ମୁଁ କହିନି ଯେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସବୁ ୱେବ ପେଜ ଗୁଡାକ ଏକାଠି ହେଇକି ଥାଏ। ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କଣ ସେ ଜିନିଷଟା ଯାହାକି ୱେବ ପେଜ ଗୁଡାକ ଯୋଉଟା ୱେବ ସର୍ଭରରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପଲେଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସାଇଟ୍ କୁ ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଗୁଡାଏ ୱେବ ପେଜ କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଡିଜାଇନିଂ କରାଯାଇଥାଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ। That is website. Clear? Next, the limit for ASDL services. ASDL service आमे कितने लिमिट रे पाई परिबा? Anyone? 18,000 18,000 डिस्टेंस रे पाई परिबा। What utility? क्वेश्चन आउथरे क्वेश्चन थिला जे आमे एई जो सर्विस ता पाइबा केते डिस्टेंस रे पाई परिबा? ASDL सर्विस क्वेश्चन ता देखा जाउनी क्लियर से देखा वाला क्वेश्चन द लिमिट फॉर ASDL सर्विस क्लियर? यस सर। Next, a utility to use to transfer files and exchange messages. को टाइम मान को भितरु फाइल ट्रांसफर और एक्सचेंज करथे मेसेज गुडा को एबे तो हम डिस्कशन करूथली फॉर टेक्स्ट आई थिंक ईमेल एबे जस्ट टिक अगर कहउथले ना इलेक्ट्रॉनिक मैसेज that you can send with the attachments like pictures or other documents to anyone. Okay, a website main page is called गोटे वेबसाइट रो मेन पेज को कोन कहंती? म ऑलरेडी सब ब्राउजर सॉरी म एबे जस्ट के कहउथली सेटा को ब्राउजर कहंती नाही सेटा को होम पेज कहंती। प्रत्येक वेबसाइट रो गोटे मूल पेज थाए सेटा को म ऑलरेडी जहा जहा एतरे अछि ऑलरेडी तुम सब गप आगरे म कहि दिछि किछ समय भीतर सब किछि कहिली। ओके, नेक्स्ट, which of the following must be contained in a URL? एग्जाम रे कोन भी क्वेश्चन आसीबो केतो बळे भी आसीबो सेटा तमे जानि ना हो। बहुत एग्जाम होउची पर्टिकुलरली एबे किछि रिसेंट एग्जाम जाइछि करंट एग्जाम तमे जदी देखिथिबो पर्टिकुलरली फोकस करितला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और इंटरनेट ऊपर। सो टुडे क्लास आई हैव डिसाइडेड टू टेक द अबाउट द इंटरनेट। ओके, which of the following must be contained in a URL? एमानको भितरु कोटा यूआरएल रे थाए? सी ऑप्शन सी, ए द यूनिक रजिस्टर्ड डोमेन नेम like this www and the unique registered domain name. URL means the complete web address. मैं just टिके आगुर कहउथली this is the complete web address सब किछि आ भितर थाए। नेक्स्ट, two versions of the internet protocol or IP are the used such as IP version or IP version 6. Each version defines IP address सेम कोटा हबो? ऑप्शन ए
ऑप्शन सी डिफरेंट आईपी तुम जो देखुथिबो आईपी v4 आईपी v6 जहां भी हो एटा डिफरेंट किछि नेक्स्ट the dash folder retains copies of messages that you have started built ready to send एबे जस्ट संगे संगे सब डिस्कशन करले आमे एबे ही डिस्कशन करथिला आई थिंक एबे संगे संगे बुली गलो पुणी ड्राफ्ट एबे संगे संगे कहितली ड्राफ्ट ओके which of the following will be used if sender an email wants to be bold italic etc to be the text message कोनटा यूज करा जीवो आ भितरु ईमेल रे सब डिफरेंट ऑप्शन गुडा थाए ईमेल रे जेतरा तमे बॉक्स ता फिटौचो कंपोज करूचो ईमेल मैसेज पर्टिकुलरली कंपोज रे ईमेल मैसेज को लिखा जाए तो इमान को भितर कोटा यूज करा जाए रिच टेक्स्ट आई थिंक रिच फॉर्मेट एवरीथिंग फॉर्मेटिंग ता भितर थिबो रिच टेक्स्ट मींस केवल टेक्स्ट को ही फॉर्मेटिंग करी हुए देन व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ एन ईमेल एड्रेस रो दीटा पार्ट थाए जोटा तमे देखुथिबो योर नेम एंड ए डोमेन नेम ऑप्शन सी at the rate of amuko.com जोटा करूचो एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ तमर जो नेम अमुको संको रखुचो तो सेटा कोनटा टू पार्ट्स ता कोन एक्चुअली ऑप्शन सी यूजर नेम एंड डोमेन नेम राइट आंसर जोटा हमें कहूचे एया at the rate of gmail.com so gmail.com is your domain name and first part is the user name okay next a repair for unknown software bug usually available at no charge on the internet is called CDA option C patch right bug do you know the about the meaning of bug what is bug in computer language bug means ना एमती अनुमान रे कह दीचो bug means error तो से error को patch करा जाए okay what is the most common way to get a virus in your computer's hard disk common way टा कौन anyone ऑप्शन बी option B by uploading pictures from mobile phones to the computer D by opening emails हाँ हार्ड डिस्क रे कोटा अछि सेटा जणा पड़ी जीव सर क्वेश्चन डाउट by uploading your informations what is the most common way in your computer hard disk रे जोटा अछि सेटा हमें जानिबा तो इटा होछि प्रॉपर वे by opening emails जणा पड़िबो हैंग होबो सेठी हमें जानि परिबो जे एठी हम कंप्यूटर अफेक्टेड हो जाइछि नेक्स्ट 32 bit system was known as internet protocol version which is still in use today anyone 4 32 bit system A is the right answer okay a dash is the term used when a search engine returns a web page that matches the search criteria एमान को भितरु कोटा सर्च इंजन को हमरो सर्च करिछि बा मैच करिछि बोली सर्च क्राइटेरिया अनुसार दे आइडेंटिफाई करे ऑप्शन बी हिट मते एटा एक्सप्लेन करि परिबो कोन एनीवन मते एक्सप्लेन करि परिबो जेतो बळे आमे कोनोसी गुटे वर्ड बा फेस दउ बाय द वे ऑफ हिट वी कैन गेट द related web pages what is the term or what is the word we have search in search engine
कौन वार्डटा बा कौन सी टर्म आम सर्च करछे पर्टिकुलर सेटा हिट द्वारा ही जना पड़े जे कोडा अछि हमर लिंक देन a modem is not needed when accessing the internet used through केतेबेले None modem of रो this. none of these ऑप्शन ए modem रो केतेबेले दरकार पड़े नाही LAN रो आ सब LAN दरकार टा तो पड़े गोटे लोकल एरिया नेटवर्क देन सेटा लोकल केमती एरिया नेटवर्क एठी modem रो किछ आवश्यक ही नथाय नेक्स्ट what are the use of the internet even just discussion all of this. All of this. information retail presentation information लागुची all of these option D all of these presentation online भी presentation भी करी परिबा everything is possible with the help of internet a dash allows sharing of broadband internet connection करिबा कोले एटा कुटा allow Router. Option C. router Yes. yes router is the right answer broadband internet connection में route देता है बा path देता है तको next this first step in transaction processing cycle captures business data through modes such as optical scanning or at an electronic commerce website कोटा first step आ भितरु Option B. Database. database maintenance option C transaction processing startup से टिके बुझियंते से कहिबा कथा जितेबले आमे कोन करूचे ना this first step in the transaction processing cycle captures business data through modes such as optical scanning of an electronic commerce website जेतरा आमे कोनसी बिजनेस ट्रांजैक्शन करूचे से जो बिजनेस डाटा रो प्रोसेसिंग होबा पई कोटा प्रथम स्टेप माने बिजनेस को रिकॉग्नाइज करिबा दरकार ट्रांजैक्शन सेटिंग होबा आगो दरकार तापर जाय कि जा नेक्स्ट among services available on the world wide web are encryption http html and firewall कोटा भितरु हबो Option A. double I and triple I http and html Against. option A double I and triple I http and html can you explain me these two things what is html and http सब डिस्कशन करी केवल Hypertext transfer protocol. एटा ला hypertext markup language. the functions of these two दुईटार काम http is the standard protocol which helps us which helps a browser to communicate with its server web server सहित communication करिबा पई web browser रो जो standard protocol दा basically use हुए that is http hypertext transfer protocol and html is like that thing by using different types of tags known as markup tags we can develop or design a web page so these two things are available next sending an email is same as None of these. none of these A. हाँ A is the right answer writing a letter गोटे ईमेल को आमे सेंडिंग करिबा ता माने कोन गोटे लेटर लिखिबा आमे तो किछि आउ किछि जिंस जेमति कि तमरो इंटरनेट रे आहुरी बहुत इंटरेस्टिंग जिंस रहि जाउछि जेमति कि आमे कहू हैकर आउ क्रैकर ए दीटा टर्म तो समस्त निश्चित भाबे सुनिथिबे कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हैकर एंड क्रैकर हैकर कोन क्रैकर कोन a person who have technical expertise break the internet security or any security of the website without any authorization
is known as what? Cracker. And the person who have authorized, they have appointed by the different companies to develop the additional security features on the website, they are known as the hacker. आमे wrongly सब बेले कहू cracker टा को hacker, hacker टा को cracker. Actually जो माने कौन करंती ना किछि खराब उद्देश्य रखी बा किछि बैड इंटेंशन रखी इंटरनेट सिक्योरिटी को ब्रेक करंती, they are the cracker. And who have the good intentions, they are the hacker. तो हैकिंग टा पढ़ा जाए, क्रैकिंग टा पढ़ा जाए नहीं, क्रैकिंग टा बाय रॉन्ग रे हमें यूज करि थाउ. अच्छा, there are many things relating to the cyber space. Cyber space means the workings inside the areas or environment of the internet. Internet रो भीतर दुनिया, internet भीतर किछि काम होउची, से सब जिंस गुडा को हमें cyber space को. And the raw rules, the regulations, whatever the related to that use of the internet or the cyber space, that is known as your cyber law. And the violating of the cyber law को जोड़ा को violating करे बा ता against रे जाए ताको हमें cyber crime को, जेमति कि सेटा तमे spoofing कोइ परिबो, phishing कोइ परिबो, trashing कोइ परिबो, then होची spamming कोइ परिबो, then जोटा कहंती हमरो identification theft कोइ परिबो. There are many type of cyber crimes are there which can violating the cyber law. The process of loading the information to the internet, that is known as upload, and getting the information from the internet to computer, that is known as your download. I mean, so that is known as the download. So there are many things over the internet. So can you tell me what are the benefits of using a web browser? गोटे वेब ब्राउजर यूज करिवारे कोन कोन बेनिफिट्स आसे, जदि आमे ए टॉपिक गुडा को क्लियर हो जाउचे ना, तो ए जो आंसर गुडा को दबा पाए हम पाई सुविधा हो जिवो. तो मते कहि परिबो कि what are the benefits you can particularly get by using web browser? जो जस्ट टिके आगुर मु डिस्कशन कली web browser, that is a special type of software which is used to access the pages of the world wide web. से वेब ब्राउजर रो यूज करी हमें कोन कोन करि परिबा? We can do many things, searching different websites, creating our own websites, creating email IDs, then after access online multimedia including radio and video broadcasts. We can do also many financial transactions or banking transactions online. We can register with the different websites. So many things can be done by the using of the web browser. Specifically, the web browser is used to access the pages of the world wide web. World wide web रे जो information उडा accessing करिबा पई web browser तो web www तो सब किछि अछि, तो ताको यूज करिबा कोले web browser यूज करा जाय. तो almost all the things when we open an internet and use it, simple thing, when we open internet and use it, there is much more need of a web browser. Internet रो फिटे कि हमें व्यवहार करिबा को चाहू छे तो आमो पाखरे जो सॉफ्टवेयर स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल रहिबा दरकार, that is the web browser. And your about the email, there are many doubts about the email, relating to the email that is particularly your normal mail, normal message, but that is written in the method of electrically. आमे नॉर्मली जेमति गोटे चिट्ठी लिखुचे तो जदि आमे ऑनलाइन रे बा जोटा कहूचे आमे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यम रे मेसेज लिखिबा, that is the email. And we can also send the attachments, means email सहित खाली मेसेज लिखा जीवनी, ता सहित भी आमे अटैचमेंट करके भी पठेई परिबा, जेमति कि किछि पिक्चर पठेई परिबा, किछि अन्य डॉक्यूमेंट गुडा को पठेई परिबा, मल्टीमीडिया फाइल्स जेमति कि तमरो कहूचे ऑडियो क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स, एगुडा को भी अटैचमेंट करी पठा जाई परिबो. तो इलेक्ट्रॉनिक मेसेज we can send to particularly anyone with an email ID. जेमति आमो ठिकाना रे आमो पाखु चिट्ठी आसी घरे पहुंची पारुची, एक्जेक्टली सेमति ओवर द इंटरनेट देयर इज द ईमेल आईडी. से ईमेल आईडी जरिया रे जनक पाखु मेसेज आमे ट्रांसफर कर देई परिबा, जे कोन सी जगह रे सेथिबो. आ सबुठर बेस्ट थिंग होची दिस इज द ग्लोबलाइज्ड मींस जणे अमेरिका रे अछि मते सेंड करिछि मेसेज, मु इंडिया रे थाई कि भी रिसीव करि परिबा, एंड मोर सेम आईडी मुझे अमेरिका रे भी ओपन करी कि भी मो पासवर्ड देखि भी से ओपन करबा. दिस इज ग्लोबलाइज्ड.
किंतु लेटर होची गोटे निर्दिष्ट जगह को जाई परुची दिस इज ग्लोबलाइज्ड कन्वीनियंस कॉस्ट इफेक्टिव रिलायबल कौन कौन केते एडवांटेज अछि ईमेल रो एंड द डिसएडवांटेजेस आर वेरी लेस so these less things are like your spamming hi jai pare overload hi jai pare and that is miscommunication सबुठार बड़ कथा miscommunication जदि गोटे लेटर भी हमरा बाउला hi जाउची ईमेल रे ताले दरकार पड़ले सेटा आउ का पाखु पळै जाई परिबो बा ठीक जगह को न जाई परिबो जोटा हमें कहूचे माने ठीक से जाई परिबो नाही तो एई भली किछि डिसएडवांटेजेस and advantages अछि ईमेल रो इंटरनेट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग today we have discussed many things and we will discuss next time such other things relating to any other topics of the computer. Okay, this class is over for today. Thank you all.